अतुल सर, क्या हाल है? कैसा चल रहा है सैनोजे में? में अभी तो ये कर्फ्यू एक्सटेंड हो गया, पूरे सिटी ने कर्फ्यू लगा दिया। हम्म। वो कोरोना तो था ही, और साथ में ये जो मारपीट हो गई, तो उसके चलते और भी सिचुएशन खराब हो गई। तो बाहर निकलना तो अब सॉर्ट ऑफ बैन हो गया है। अभी तो कल तक तो मैं थोड़ा बहुत शाम को दोपहर में वॉकिंग वगैरह के लिए जाता था। अब बोला जा रहा है कि वॉक पे भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब लॉकडाउन एज एन कंप्लीट लॉकडाउन, घर के अंदर ही रहो। तो ये जो Is there any audible problem? नहीं, वी कैन हियर यू नमन। सरप्राइजिंगली केवल Can 4 I लोग audible? आए। या अमन, यू आर ऑडिबल। Hello. अमन का कुछ कनेक्शन इशू है। हाँ जी सर, क्या बोल रहे थे? तो आज मैं बोल रहा हूँ आज काफी कम लोग आए हैं। हाँ, विशाल भी यही बात बोल रहे थे कि अब थोड़ा लॉकडाउन ये रिलैक्स हो गया इंडिया में। आज से 1 जून से काफी कुछ ओपन हो गया है, तो सब लोग अब बिजी होने लगेंगे धीरे धीरे। बट अब तो रात के 10 बजे लोग कहाँ निकलेंगे? नहीं, मतलब वही है ना कि अभी क्या है कि कोई कुछ काम कर रहा है दिन भर, तो फिर वही है कि शाम को थोड़ा ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए। तो चलिए, एनीवे यही हम 4 लोग ही बात करते हैं। अतुल, विशाल, नीरज है, अमन भी चला गया। अमन का कुछ कनेक्शन इशू लग रहा है मुझे। तो मुझे विशाल का भी नेटवर्क खराब है आज। अभी कलकत्ता में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, लगता है वो फ्लडिंग के चलते टावर वो गिर गया होगा कुछ। तो ये सर, कि व्हाट्स यहाँ योर पे हाँ बोलिए। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि चलो हम ही कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर लोग ज्वाइन करते हैं, नहीं तो जल्दी रैप अप कर देंगे। ठीक है। तो आप क्या पूछ रहे थे आप? आज का डिस्कशन का टॉपिक वर्क फ्रॉम होम के अराउंड ही रखा है विशाल ने। तो आई वाज जस्ट आस्किंग व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर। क्या क्या इश्यूज हैं, क्या 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 लगता है आगे चलने वाली चीज है? मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि वर्क फ्रॉम होम, मैंने पुराने मीटिंग में बहुत बार बोला है स्ट्रांगली कि वर्क फ्रॉम होम इज द नॉर्मल एंड शुड बी द नॉर्मल। जिसको जहां से मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं, मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड आगे करता हूँ, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो आप जैसे कि मैंने पर्सनल एग्जांपल एक दो देता हूँ कि ड्राइव कर रहा हूँ, रास्ते में अचानक कुछ याद आ गया काम, साइड में पार्किंग की, लैपटॉप हमेशा कार में रखता हूँ, या नहीं होता आजकल तो फोन से हो जाता है, काम कर दिया फिर आगे बढ़े। अचानक नींद आ रही है, थक गया हूँ, बहुत काम कर रहा था, किसी कारण से मान लीजिए फिर भी जा रहा हूँ, तो रास्ते में कार पार्क कर दी, रोक ली, तो कार ही एक तरह से ऑफिस के रूप में काम कर रहा है मेरा। मुझे जहां भी जाना है, जिस मीटिंग में, मान लीजिए 2-3 मीटिंग्स हैं इधर से उधर, तो एक मीटिंग सन होजे जहाँ मैं रहता हूँ, अगली मीटिंग सेंटा क्लारा है 15 मिनट दूर, और अगली मीटिंग काफी दूर है, मान लीजिए कुपर्टिनो जो 30-40 मिनट है। तो सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, बट कार में हमेशा मैं सामग्री इकट्ठा करके रखता हूँ। सामग्री में चॉकलेट, पानी, कुछ खाना, और एक लैपटॉप, एक बैग है मेरा, बैकपैक, जिसको मैं हमेशा उसके बिना घूमता ही नहीं। कुछ लोगों ने मुझे मेरा फोटो भी मजाक में डाला था कि बिना उस बैकपैक के, बिना उस झोला के अतुल कुमार आधे लगते हैं, उनका बॉडी का पार्ट है। तो बोला कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो जो झोला जो ना, मैं बॉडी का, मैं पॉकेट का एक्सटेंशन है, बड़ा पॉकेट है मेरा। द बैकपैक इज माय बिगर पॉकेट। उसके पीछे एक और रीजन है कि चीजें मुझसे खो जाती हैं, लैपटॉप छूट जाता है, फोन छूट जाता है, तो मैं हर चीज को क्या करता हूँ, सब कुछ को झोले में डाल देता हूँ, कुछ भी हो कहीं
बुक हो, मैगजीन हो, पानी हो, सब उसमें रखता हूँ। और उसी बैकपैक के साथ मैं इंडिया में मैं महीनों तक काम चला सकता हूँ जस्ट ऑन अ बैग, एज लॉन्ग एज मुझे पानी का और कुछ खाने का इंतजाम हो। खाने का भी जहाँ पे भी आपको कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कोई कैफेटेरिया मिल जाए, कोई भी कहीं पे स्टारबक्स मिल जाए कहीं भी, तो मैं स्टारबक्स में ही बैठ के रोक के मैं घंटों घंटों काम कर लेता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है कि यही है कि आपके बैकपैक में या आपके पॉकेट में सब कुछ है, और बाकी ये सब जो ऑफिस है, फैंसी ऑफिस, वो तो सब दिखावा है। मतलब एक क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए मेरे पास भी जहाँ मैं रहता हूँ तो नीचे में काफी अच्छा सा फैंसी सा ऑफिस है, सोफा, काउच, सब कुछ है, पार्ट ऑफ द रेंटल अपार्टमेंट। तो किसी को बुलाना, 2-3 कंप्यूटर्स भी हैं, तो मुझे दिखाना है कि नहीं मैं सीरियस एंटरप्रेन्योर, वो वर्क फ्रॉम होम टाइप का नहीं दिखाना है, तो मैं चाहूँ तो सूट वूट लगा के उनको प्रॉपर काउच पे बैठा कर डिस्कशन भी कर लेता हूँ। कंप्यूटर पे भी नीचे दो कंप्यूटर, उस पर भी काम कर लेता हूँ। लेकिन आइडियल केस यही है कि all I need is my backpack, and mainly बैकपैक में मैं लैपटॉप या चार्जर वगैरह सब है। चार्जर सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे एक्सेसरीज में, स्पेशली पीपल हु नो दिस ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल। मोर देन वाटर तो सबसे जरूरी है, पानी तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी चार्जर नहीं मिला, इन केस यू डोंट गेट ए चार्जर, तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और चार्जर रखने के फायदे हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं चार्जर ही नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टी पावर का जो कॉर्ड आता है जिसमें कि आप 4-5 प्लग्स लगा सकते हो, प्लग्स भी और ये सब भी लेके जाता हूँ कि आपको आईफोन का चार्जर चाहिए, ड्रॉयड का चार्ज चाहिए, लैपटॉप का चार्जर चाहिए, पीसी, वो सारा लेके मैं चला करता था। बैटरी भी, पावर बैंक, सब। तो उसके साथ है कि आप रोमिंग में बैकपैक में मेरा ऑफिस घूम रहा है, वेयरएवर आई गो माय ऑफिस इज देयर। और कल को मुझे फैंसी ऑफिस, फैंसी किसी बिल्डिंग में मीटिंग है, वहां भी मैं अपने कभी कभी मैं कार में वो एक कोट या सूट भी लेके रखता हूँ कि मीटिंग ऐसी है कि आई कांट गो इन अ टी-शर्ट और जींस, तो सूट भी निकाल के कपड़े भी बदल लिया। तो एवरीथिंग इज इन द बैग और एटलीस्ट इन द कार। तो मुझे लगता है ये एक एंटरप्रेन्योरियल लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। ऑब्वियसली किसी बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो जहाँ की सब लोग सूट बूट, क्या बोलते हैं, ब्लैक टाई इवेंट टाइप पे, तो वो भी होता है, मुझे उतना सूट नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जीन्स टी शर्ट जहाँ और बैकपैक को इज्जत मिलती हो, उसी कॉन्फ्रेंस को मैं थोड़ा ज्यादा इज्जत के साथ मैं भी जाता हूँ। हाँ, और खासकर बे एरिया में तो मतलब जैसा सुनने में आता है जीन्स वाले की ज्यादा इज्जत है। हाँ, तो ये भी आपने पॉइंट बोला, मैं भूल गया था। तो न्यूयॉर्क सिटी में चूंकि मैं ज्यादा वहाँ पे 13 साल के आसपास ईस्ट कोस्ट में रहा हूँ, तो आप वॉल स्ट्रीट पे जा रहे हो, तो अगर आप सूट बूट नहीं हो, आपका ड्रेस कितना अच्छा है वो आपको, अदरवाइज ड्रेस अच्छा नहीं है तो आपको बिल्डिंग के अंदर आपको सिक्योरिटी आपको शायद रोक देगा कि कोई आ गया, होमलेस आदमी आ गया, या कौन कोई बेरोजगार भटक रहा है। तो वहां पे सूट बूट पहुंचना बहुत जरूरी होता है। न्यूयॉर्क सिटी का कल्चर भी है कि स्पेशली वॉल स्ट्रीट में जो बैंकर्स है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो चाहे ट्रेडिशनल बैंकर्स हो, चाहे आप सिटी के ऑफिस में जाओ चाहे गोल्डमैन सैक्स में जाओ, सूट बूट पहनना थोड़ा जरूरी कल्चर हुआ करता था। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कि चलो फ्राइडे को कैजुअल्स पहन सकते हो, या कुछ एरिया में कि आप वॉल मतलब कि वीकेंड में आप कैजुअल्स पहन सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे ज्यादातर जो बड़े बड़े जो बैंक है, आप जेपी मॉर्गन में घुस रहे हो, सिटी बैंक में घुस रहे हो, गोल्डमैन सैक्स में घुस रहे हो, तो सूट बूट इज लाइक ड्रेस कोड। अगर आप नहीं पहन रहे हो तो फिर सिक्योरिटी गार्ड आपको सस्पिशन से देखेंगे, या एंट्री तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इज्जत नहीं मिलेगी जल्दी। तो वो ईस्ट कोस्ट का थोड़ा कल्चर है, ईस्ट कोस्ट थोड़ा कल्चर है। वेस्ट कोस्ट में ठीक उल्टा है, अगर आप सूट बूट में चले गए तो लगता है ये तो कौन आ गया, ये तो लगता है कोई ईस्ट कोस्ट वाला आ गया। स्टार्टअप वर्ल्ड में जाओ, कोई बहुत बड़ा वीसी होगा, बहुत बड़ा $1 बिलियन का होगा, कल को अब आप एलॉन मस्क टाइप लोगों को या इस तरह के लोगों को आप सूट बूट नहीं पहनाओगे कभी कभार, या स्टीव जॉब्स टाइप के लोगों को, स्टीव जॉब्स का आपको याद होगा, एक ही टाइप का उसका वो जो टी शर्ट होता था, हुडी, और कल को मार्क जकरबर्ग भी वही पहनता था, मार्क जकरबर्ग भी वैसा ही हुडी पहनता है, स्टीव जॉब्स पहनते थे। और जब मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस में टेस्टिमनी देना था,
तब सूट वूट पहन के जाना पड़ता, अदरवाइज वो भी हुडी पहन के घूमता है। और वो सिलिकॉन वैली का लाइक ड्रेस कोड है कि आपके पास एक जीन्स है, एक टी शर्ट हो, टी शर्ट या हुडी, एंड यू आर गुड। एंड द अदर गुड पार्ट इज यहाँ पे you don't have to wear those thick jackets because यहाँ पे ईस्ट कोस्ट की तरह बहुत ज्यादा सीरियस ठंड नहीं पड़ती है। न्यूयॉर्क में ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी है, थोड़ा बहुत एटीट्यूड है और थोड़ा बहुत वेदर भी है कि आप सूट बूट नहीं पहनोगे। एक सूट बूट नहीं, सूट बूट के ऊपर भी 2-3 लेयर पहनना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी -18 डिग्रीज में भी मैं गया हूँ, तो इट्स कैन बी रियली रियली ब्रूटली कोल्ड। आपके हाथ में ग्लव्स भी नहीं है तो भी आपका हाथ एकदम फ्रोज हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है ईस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट में सियाटल हो, टेक्सास हो, टेक्सास मतलब और कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे ये जो ड्रेस कोड है थोड़ा इनफॉर्मल टी शर्ट एंड जीन्स और समर वाला टाइप का ड्रेस, वो थोड़ा यहाँ पे सूट भी करता है वेदर वाइज, एंड वहाँ इसको थोड़ा इज्जत भी दी जाती है। क्या आप लगता है सच में एंटरप्रेन्योर हो? तो सर विद दिस जो भी अभी कोविड एरा का जो भी चेंज आ रहा है, इसके हिसाब से लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक वर्क फ्रॉम होम पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? इज इट गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल, और मतलब लोगों का कुछ तो बदलाव देखा है लोगों ने, और कुछ पॉसिबिलिटी भी दिखी है कि हाँ हो सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन वही माइंडसेट वाली बात आ जाती है कई बार कि पुरानी जो बैठे हुए हैं बड़े लेवल पे लोग, तो उनको वही लगता है कि जब तक सामने बंदा बैठ के काम नहीं कर रहा है तो फीलिंग नहीं आ रही है। सो हाउ यू थिंक अबाउट दिस, जो भी कोविड का जो इम्पैक्ट है? हाँ, तो कोविड का सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये हो गया, कोविड ने लोगों को दिखा दिया कि द वे यू हैव बीन रनिंग बिजनेस और द वे यू हैव बीन रनिंग लाइफ, दैट्स ऑप्शनल, दैट्स नॉट कंपल्सरी। तो जैसे कि गूगल ने इन लोगों को बोल दिया कि पूरे 1 साल आप घर से काम कर सकते हो। फेसबुक ने भी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये अनाउंस कर दिया कि अब 1 साल तक घर से ही काम करो। तो जो इतनी बड़ी कंपनी बोल रही है कि लोग घर से काम कर सकते हैं, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि जब हम 1 साल तक काम कर सकते हैं कोविड के चलते घर से, तो कोविड खत्म होने के बाद क्या रीजन है कि हमको ऑफिस आने की जरूरत है? तो ऑफिस आना हैज टू बी जस्टिफाइड। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे उसमें टीसीएस ने किया है। टीसीएस ने शायद बोला है लोगों को कि only 20% of the employees will have to come to the office, बाकी 80% can continue to work from their home। और सेल्स में जो लोग होते हैं anyway they have to be on the road all the time, आप फ्लाइट टू फ्लाइट और कार टू कार जंप कर रहे हो। तो कुछ प्रोफेशंस में जो भी फील्ड वाला जो भी वर्क है उसमें एनीवे ऑफिस वाज नॉट नीडेड, ऑफिस लोग जाते थे। बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हैं जैसे डेलॉयट है, एक्सेंचर है, मैकिंजी है। तो उन कंपनीज में क्या होता है कि लोगों की सीट नहीं होती, सबों की ऑफिसेज भी नहीं होती है, ऑफिस स्पेस होता है। उस ऑफिस में मान लीजिए कि 1000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, बट उसको उस ऑफिस को यूज करते होंगे 10,000 कंसल्टेंट्स डेलॉयट के या मैकिंजी के। एंड उसमें क्या होता है कि इफ यू नीड एन ऑफिस, तो आपको ऑफिस का कुछ ऑफिसेज भी बने हुए, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स यू कांट हैव इट इन ओपन, तो उसके लिए ऑफिस स्पेस बना होता है। यू कैन बुक दैट ऑफिस स्पेस। और बड़ी बड़ी कंपनी में भी मैंने देखा, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट, टीसीएस में भी, कि ज्यादातर एम्प्लॉइज हो या कंसल्टेंट हो, लीडर्स भी हो, बड़े बड़े बॉसेस के पास भी ऑफिस नहीं होता है। कुछ ही लोगों के पास ऑफिस होता है क्योंकि बहुत बड़े हैं, और कुछ मीटिंग हो तो उन्हीं के रूम में सारी मीटिंग्स हो जाएंगी। और कभी कभी ये भी देखा मैंने कि मैं पिछली कंपनी वर्चूसा में, जबकि वो न्यूयॉर्क में एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, सबसे प्रीमियम स्पॉट पे जो था, बहुत क्या कहते हैं, मान लीजिए, मुझे याद नहीं आ जगह एग्जैक्टली, मान लीजिए कि टाइम स्क्वायर के पास कोई बहुत अच्छी आपकी फैंसी से ऑफिस है। उसमें कंपनी के लिए डजंट मेक सेंस कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस में ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करे। सारे कुछ 1-2 बड़े लोग हैं, सीईओ का अपना एक अलग ऑफिस होगा, 2-3 हो सकता है बड़े लोग हैं जो कंपनी के, उनके पास अपना ऑफिस होगा। ज्यादातर लोग का शेयर्ड ऑफिस है, यानी कि रूम है, आपको जब चाहो ब्लॉक कर लो, बुक कर लो, और कैलेंडर के थ्रू ब्लॉकिंग का भी सिस्टम होता है, या जो सेक्रेटरीज एडमिन्स होती हैं, तो उनका एक वन ऑफ द रोल्स इज कि दे रिजर्व आपको स्पेस। मैं हमेशा थोड़ा बहुत मजाक में कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं जेनपैक्ट में था, जेनपैक्ट में जब था, तो जब भी वहां जाता था, रॉकफेलर बिल्डिंग में जेनपैक्ट का ऑफिस था, टाइगर त्यागराजन सीईओ है,
उनका ऑफिस, उनकी सेक्रेटरी जो थी सैंडी, वो मुझे बोलती थी कि तो ऑफिस इज योर्स टुडे, टाइगर इज ट्रैवलिंग, इज नॉट हियर। तो सीईओ का ऑफिस मुझे बता थे कि आज आपका है, कि कोई मतलब कि आज ही इज नॉट, मतलब आज ऑफिस नहीं आ रहे हैं। और ज्यादातर जो लोग आते थे उन सबको भी किसी न किसी से, अगर उनको ऑफिस चाहिए तो किसी से अपना बात करके ऑफिस टिप्स लेना पड़ता था या बुक करना पड़ता था। तो ये जो ऑफिस का जो आइडिया है ना, वो आइडिया मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना था, माइंडसेट को भी रिफ्लेक्ट करता है। पुराने कंपनीज में आपकी औकात, आपकी स्टेटस रिफ्लेक्ट होती है कि आपका कॉर्नर ऑफिस है कि नहीं, आपका कितना बड़ा ऑफिस है कि नहीं। ऑफिस में बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत कॉस्टली पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वो स्टेटस सिंबल हुआ करता है। मैं जी में जब था तो आई रिमेम्बर कि मुझे एक ऑफिस मिला हुआ था, बहुत नहीं, मैं उस समय जी से जेनपैक्ट आ गया था, बट फिर जी के लिए काम कर रहा था। लेकिन मेरा काम ऐसा था, मुझे मेरे जो बॉसेस थे तो 4-5 जो बड़े बड़े लोगों को ऑफिस स्पेस मिला हुआ था, मुझे भी एक ऑफिस स्पेस मिला हुआ था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि जी में थे, और मैं उस समय जेनपैक्ट में था लेकिन जी में काम करता था। तो वो लोग आके कभी कभी मुझ पे ताना मारते कि अतुल तू तो साला वेंडर है, और तेरे पास ये कितना बड़ा कॉर्नर ऑफिस है और हम लोग को एक छोटा सा क्यूब मिला हुआ है। हम बोले क्या करें यार, हम वेंडर हैं, हम थोड़े काम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल टाइप का करते हैं, इसलिए मुझे ऑफिस स्पेस उन्होंने दिया हुआ है। तो ये जो ऑफिस स्पेस जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि इट हैज प्योरली बिकम मोर ऑफ अ स्टेटस एंड ईगो थिंग, नॉट अ प्रैक्टिकल रियलिटी। अगर आपको काम के लिए मीटिंग रूम चाहिए, क्लोज रूम चाहिए, यू कांट हैव इट इन ओपन, तो आप रूम बुक कर लो नीड टू नो बेसिस। या उबर मॉडल है, जैसे उबर में जब कार की जरूरत है तो आपने कार बुक किया, आपको कार मेंटेन करने की भी हेडेक नहीं है। सेम इन द ऑफिस स्पेस आल्सो, पीपल आर रियलाइजिंग कि, या इवन उसी से कार का एग्जांपल, कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज में, पुराने कंपनी में, आई रिमेम्बर मेरे जो सीईओ थे टाइगर का, बहुत सारे लोगों को उनको शॉफर ड्रिवन कार हुआ करता था कि आपकी गाड़ी कोई और चला रहा है शॉफर। आज वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार हर इंसान के पास है। आज उबर, ओला और लिफ्ट, ये सारी क्या है कि आप बैठ के ऑफिस में बैठ कर कार में आप ड्राइव कर रहे हो, मतलब ड्राइव कोई और कर रहा है, और आप बैठ के अपना लैपटॉप पे चाहो तो अपने काम कर रहे हो, आपको कॉल लेना है, मीटिंग्स करना है, सब कुछ कर सकते हो। तो ये जो चेंज आ रहा है, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट। ये शिफ्ट काफी सालों से आ रहा था, फ्रॉम द गुड ओल्ड डेज, जहाँ की बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बहुत स्टेटस सिंबल माना जाता था। आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ज्यादा है एक बड़ा साइन बोर्ड, एक स्टेटस सिंबल है। कि किसी बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक नहीं 10 कंपनीज काम करती हैं, बट वो साइन बोर्ड किसका लगा हुआ है, बड़ा सा साइन बोर्ड, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा उस कंपनी को देना पड़ता है। कि मान लीजिए कोई उस ऑफिस, उसमें 10 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, 5-10 मिड साइज कंपनीज काम कर रहे हैं, कुछ कुछ मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, बट किसी एक कंपनी को अपना साइनेज लगाने के लिए, और उनको साइनेज लगाने के लिए में भी $100,000 पर एनम या $1 million देना पड़ता होगा। जैसे टाइम स्क्वायर में आपको एड निकालना है, तो टाइम स्क्वायर का जो सबसे हैपनिंग पॉइंट है, वहाँ के सैमसंग अभी जैसे उसका सबसे बड़ा उसका एड आता है, तो वहाँ पे आपको अपने साइनेज के लिए, एड के लिए आपको खरीदना पड़ता है। मैंने कुछ तो कभी काम किया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है रेट वगैरह का। तो बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन डिमांड। इन शॉर्ट में, लंबी कहानी का शॉर्ट ये है कि थिंग्स विल बी ऑन डिमांड, और व्हाट आई से उबराइजेशन ऑफ एवरीथिंग, कि एवरीथिंग ऑन अ नीड बेसिस। कि आपको बड़ा ऑफिस चाहिए, ऑफिस आप बुक कर लो, आपको बड़ा कार चाहिए, आप कार बुक कर लो, बट डोंट ओन एनीथिंग। ओनरशिप इकोनॉमी के अगेंस्ट ये जो उबर इकोनॉमी जो आ रहा है, या ऑन डिमांड इकोनॉमी, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी the normal coming forward. Obviously, some people will still have their cars, some people will still have their offices, but वो person to person choice होगा, not by compulsion. आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। विद इंक्रीजिंग रियल एस्टेट कॉस्ट, और रियल एस्टेट कॉस्ट का सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम न्यूयॉर्क या बे एरिया की बात करें, इधर दिल्ली मुंबई में रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत हाई हो गया है। कंपनीज मतलब गुड़गांव का अगर मैं जैसे पिछले 10 साल में एक्सपेंशन का पैटर्न देखूं, तो पहले मेरा ऑफिस जो था मेरे घर से 20 मिनट की ड्राइव पे था, फिर वो धीरे धीरे 40 मिनट की ड्राइव पे हो गया, और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहीं 50 मिनट्स तक चला गया है। मतलब नई नए मतलब कंपनी आते जा रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं, और गुड़गांव बाहर की तरफ फैलता जा रहा है, और जो भी नया बिल्डिंग बनता है वो तुरंत ऑक्यूपाई हो जाता है, और आपको मतलब बाहर ही जाना पड़ेगा। जो पुराना एरिया था साइबर सिटी के अराउंड, साइबर हब और ये सब है, यहाँ पे तो मतलब एक इम्पॉसिबल सा हो गया था। अभी लेट्स सी हाउ थिंग्स विल चेंज, और रियल एस्टेट के प्राइसेस आर आल्सो गोइंग टू हिट बिकॉज ऑफ इट। तो
डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट लगता है, फॉर द टाइम बीइंग तो ऐसा लग रहा है. बाकी डाउन द लाइन 1 year it will give a more clear picture, I would say. Mr. Sayyed is here, so I would like to have his point of view around it. Yeah. Hello, everybody. I'm Syed. I am an IT consultant with 15 years of international experience. And with IT, I think in that view, as Atulji said, that many of the companies are cutting short the spaces, and they don't want to have bigger spaces. Accidentally, I happened to do some what you call for my one of my offices. I just wanted to find out the prices. So I had been doing some hunting for the spaces in Hyderabad, and I could find the rates were around 35 to 40 rupees per SFT and 60 rupees based on the different locations. But now the boom time, I find a lot of people asking for, are you interested in going for this? So what I see between the difference in the calls previously and now, they have increased it. This means that there's less demand for spaces now. With the COVID, it's completely shattered the real estate. I don't think in future with what you call there will be any appreciation in real estate. I'm sure this COVID has changed the minds of people who are investing in vertical towers and offices. Except for in oil and gas industry and shipping industry, some industries where manpower go to office physically, there you might require some spaces, but even those spaces will be changed. There will be new norms like the office space should be very bigger, 2 meters distance, and it should be well sanitized. And such kind of offices will come now, and it's going to be expensive for any normal businesses. So work from home will be the new normal, and there might be what you call some initial disturbances like the family disturbance or kids disturbances or constant focusing on, but it gets over a period of time, people will adjust and people will try to make their own space, or they may say, okay, this is my room, or I'll be working from home, and so this is my time. I happened to attend one of the webinar in London, and it was conducted by one of the CEOs, and what she already assigned, she already timed the calendar of the day. She already told, okay, these are for the kids, these are my working hours, these are my what you call office hours, this is the time that I can come and what you call help you out. And if small kids who are very toddlers and very work or 2-3 years who understand, who cannot live, for them some solutions for what she was suggesting is like, till that there is a booth inside during this time, and you should not come during this time, or their characters which they don't like, So that was one solution they suggested. If you want to work from home and kids are disturbing you. So people are trying to find new ways. People are trying to find new areas in their own home for work from home. So obviously everybody wants to cut short the what you call the price or costing. Every company don't want to have a lot of costing. So this will really add to their profits. And if things can happen from home, this will be the new norm. I put some new points. A couple of points I wanted to add to you. Syed, all great points. Couple of points I wanted to add. Number one question for you: have you used the T-Hub in Hyderabad? T-Hub? No, yeah. I have been to T-Hub once for this co-working space. Co-working space.
they showed me some demos, how it is, what you call useful, and what kind of collaborations we can have. And but what I found, there are huge spaces available. The towers, what you see generally, is not fully occupied. Right. Let me tell you, all the towers I've seen, there's beautiful towers, and there are a lot of spaces. I happen to rub shoulders with some of the big, not what you call real estate developers. I've seen them, and they said, I said my pricing is my requirement is very less price. They would just say, go, you can get good what you call loans from banks. You play with the banks. They're telling me to play with the banks. I said, okay, thank you. So what I wanted to say is, still there are a lot of spaces available in. I think it's the same thing in every city, I believe. If the people really do their good homework, they'll find a lot of empty spaces, lot of floors. You cannot have all the floors what you call full, and so it's spaces is not a constraint. And now the new offices will not be the same way, where people, there were like they were charging around 6,000 to 10,000 rupees or 20,000 rupees per cubicle. So it will be now, it's like if they want to have office, if it is mandatory, the new offices will be like, it should be a very big cabin, like Atul said. So everybody will have a very big cabin for safety concerns, and this is the new norm, But for IT administrators, couple of things. Yeah. So Sayedji, couple of things I wanted to add again on that is that people commute. You mentioned about the commute. So that's a big thing. People spend a lot of their time. When I was in Connecticut, and we used to, I did not go to New York. I was in, my GE office was in Connecticut, and home was, I could literally one day, I could literally walk up to my home. So that's a luxury. Not many people have that, but that's what most people want. Yes, I agree with you. That's especially in US. And one way companies have tried to do that is, you think of any large companies with big campuses, like in India, Infosys is a huge city. Infosys campus in Bangalore itself is like a city. They have parks, they have gyms, they have swimming pools, they have cricket. Everything is inside the campus. So the office and where the employees live, they are basically part of the same campus. You can literally walk up, and then they also have the shuttles. Like here in Bay Area, you see it all the time. There are shuttles which come for all the large companies. So there's a Google shuttle coming in, and there's a Facebook shuttle coming in. They're picking up all the employees on the shuttle, and they will take the employees directly to the office. The employees don't have to drive, and that's a big thing. And the other thing is, the shuttle also has Wi-Fi. So in the shuttle, in the bus, people are doing work, whatever they want to do. And then one is shuttle, and the other thing is the literally a home type, a village type campus, where your office and your home, they're all one and the same. And this is one of my dreams too. Once I have some money, then I will have the same thing. Wherever I'm living on, let's say, 4th floor, and 1st floor is my office. It's a shared space, so it will have coffee and tea and places where TV, people to hang out. And for me, it will be that'll be a dream that if people can, it can be a professional Starbucks type cafeteria, or maybe even I can run a coffee house. So you come there, you're having some business meetings. Come there, you can buy the coffee from my company, my small startup. You can rent the space from my company, and then you just hang out. And that is something similar arrangement is very popular. You would see in Bangalore has a lot of them. Bombay also has them, where people go to use this co-working spaces, or sometimes in Starbucks and what is the name of the company we just shut down, the Indian equivalent, Cafe Coffee Day. So when I'm in Jersey City, my previous city,
I see that many people, we started knowing each other because the same old people, all they're doing is taking calls outside the Starbucks, and then if they have to do some work in the quiet, they'll come inside, have a coffee. So that is the other culture going to your these snacks and coffee and all these things will be available. They even most of the Starbucks, they also have these charging stations, and obviously one of the biggest perks which Starbucks has is people go to Starbucks not for the coffee, they go for the Wi-Fi. Or Starbucks have Wi-Fi default. And most of the similar other coffee places have. Restaurants also started having free Wi-Fi. So charging station, Wi-Fi, these are the two things which most people need. Everything else is optional in my view. And I think that's where most of the office of the future is going to be. Wherever you get a place to charge your phone, your laptop, and wherever you get to charge yourself, and yourself you mean water and tea and snacks or whatever. And that would be, I think, a very beautiful place for many people, because your office work and your regular work is one and the same, and doesn't. But for many people, it will be very disturbing too, because few people would want to have a complete boundary, and they don't want to mix work and office. So work and home. So when I leave office, doesn't matter I'm driving 30 minutes or 1 hour. Once I come back to home, it's my zone. I don't want to bring my work. Many people leave their laptop, computer also at office. They don't come with a laptop. And for those people, this would be a very disturbing trend too, because their life is very disrupted because of Corona, because the offices come to their homes. For people like me, it's ideal. It's a dream world. Okay, so I will add a short story here. मेरे neighborhood में एक family है. So they are having a big floor, like a 4-bedroom kind of, and big hall. So good, sufficient area. And both of husband and wife are working in IT. They have 2 small kids. The younger one is around 2.5 years. So one fine day when this lockdown started, so both of them are working from home because of this lockdown. So like after 15 days when this lockdown started in India, he's good friend, so he called me that, Neeraj, we are facing a lot of problem because our kid is disturbing us a lot. He knows that in which room we are sitting, and he keeps on banging on the door for the whole day. And because of this, we find it very difficult to go to meetings, speak during the meetings, unmute, and then because there is continuous noise, and at times I feel irritated, and at times I also feel like what other people are thinking, like what's going on in the background. So these kind of challenges are there. For me, I am having a separate room at first floor in my house, and he said that, Neeraj, can I come to your house and use your first floor room, because that's entirely at a different floor and there will not be any disturbance. So I just want to raise a point, like these kind of new challenges are also being faced because of this whole thing. So I want to go to Shama sir, because sir, this work from home is new to many people because of COVID era, but not that new in IT industry. From your perspective, like you comes from that time when work from home was not even coined, this term was not even coined. So what's your take on this? What's your perspective about this work from home thing? Yeah, this is a very good point actually. See, personally, I do not like to work from home. I like people, okay? So it's a very uncomfortable situation, but I have to accept. So that's how many people are accepting it. But this sort of situations, one has to accept also, like the disturbances by the children and all, that other people also has to understand, and they also have to understand. So this is a new normal, and there is no option today. But definitely it's a challenge. One point example, Shama just wanted to add to that. If child was a disturbance for few people, then forget about it. In Silicon Valley or many other places, people are even allowed to, even your dogs or cats also come to the meetings, and they join, and people have their cat on their lap and they're attending meetings. And exactly. The clients are also okay with that.
Yeah, so you have to explain to the clients that, look, there may be some disturbances, and they will understand in this scenario, okay? So like I was doing some Zoom calls, and my wife was doing the puja and all. She was blowing the conches and all. So I explained that what it is. So without getting myself disturbed that I am affecting other people, better to explain this. And people are very accommodative, what I can see. And that's the new normal and how it needs to be adjusted. But And to, working from home, it comes with a challenge that what is your clear start time and what is your clear finish time. Because sometimes what is happening, I'm working up to 11:30, 12 in the midnight, which I never did in my life. I used to normally after 7 or 7:30, I never picked up any phone. But now I'm working even up to 11:30, 12. So then I'm deciding by, I have to make a clear finish line that after 7, I will not work. So working from home comes with a challenge, like I was listening, and you have to, clearly dedicate a particular room, or even if you do not have any room, maybe one area of your drawing room, it has to be converted into an office. Like you'll be going religiously at a particular time, and you have to explain to your family that, look, this is my start time, and I do not want to get disturbed. So you have to create a mental Lakshman Rekha. Otherwise, very difficult to focus, to be very honest, because there are so many distractions, even being at home. So I do not know whether working from home, what is the view from the IT sector. IT sector, it is not new. Many IT companies were doing it before also. But how much they remain effective in the work while working from home, that I do not know, honestly. Is it the same quality while you work in an office space with your colleagues, or is it less productive, or what it is? I cannot comment on that. So if somebody of you know, if you can comment, that will be good. so I have few comments on that, Shamaji. Number one, I have found, and many companies have also discovered that it's also about how communication. Number one, communication is key to everything in life as well as business. So as long as you have managed the communication to your clients, to your colleagues, and everybody else, this is my working hour from this time to this time. Reach me this time. I'm not able, or don't ring my phone after this time. And if they don't respect you, then also you can make sure that you don't, by practice, that nobody picks you, nobody calls you at a time after 9 p.m. or whatever time you have set up. So that this boundaries is the word I will use. Communication, and the other is boundaries. We have to set boundaries, that you're not allowed to call me, encroach in my personal boundaries. So if I don't, just like the main beauty of the traditional workplace was that your work life and your family life is separate. So people do all the family thing at home, and there's a personal life. As soon as you get inside the car, people start taking conference calls, and then once you hit the office, then work starts. That boundaries are getting blurred and sometimes even evaporating. So then we as individuals each person has to set their own boundaries. This is my working hours. This is the time I take a nap. I also take a nap during the day. Doesn't matter I was working for a large company or a small company or on my own. So people even have some of the large companies very famous also. Google, for example. Google has a room for people to take a nap. They even have a shower. You can take a bath. There's a massage room. All those facilities are available in some large companies. And many other companies, I think, will start switching towards that model, that they will make your office so luxurious that people would like to go. When I go to the office, I get a spa type treatment, and besides getting snacks, coffee. So big companies will want to attract the employees to the companies by giving all these perks. You're feeling
want to take a nap, okay, there we have a nap room, or we have a meditation room, or even if you have different, if you want to, religious type of person, okay, there is that room where you can have a puja, temple, or namaz, or Christ, whatever you want to have across. So companies are adapting that so that we will make sure that we have a home time feel in your office. And same time, we have been employees as individuals, especially in the consulting world, people have made their homes as office. So as you said, in a separate room, a separate zone in your home, which is like your office. So these boundaries between office and work is, in my view, is evaporating very, very soon. And the other thing which is changing is the boundary between employee and consultant. Initially, the dream of every person used to be going to, especially from India, or especially from the background I come from, Bihar. Every person's parents' dream was कि मेरा बेटा या मेरी बेटी will go to a government job, सरकारी job. That was dream. Becoming security, prestige, and all those things, right? And then now things have changed. Now every parent's dream is कि my beta and बेटी goes to Google or Apple or True. So in India, for example, Infosys or Cognizant, so that has become the new dream. Yeah. So the world is changing, and some people are able to adapt, and some people are not able to adapt. So the people who adapt best, I mean, that was one of the meeting, I think, session we had. I forgot which meeting was this, but the change. Yeah, this was an IM meeting we had this weekend. IM Society meeting, a very senior leader with like 30 plus years of experience. He gave a presentation on change is the new constant, and we all know, we already heard it many times. Change is the new constant. So either and also gave a presentation, one to in a Toastmaster call, and even otherwise I gave a presentation also. You have a choice between being a dinosaur or being a cockroach. Cockroach survives for millions of years. Dinosaur don't exist. So we all have to get the cockroach mindset. You might not look beautiful. People might trample on you, but cockroaches survive. Dinosaurs don't. Right. Yeah. No. So you were talking about meditation part. So I would like to put some of the views. Yes, sir. Because as I mentioned that I'm a very people person. So remaining all the time virtual, it really stresses me out in a way which I do not understand. And on top of that, there was a cyclone over Calcutta, and we were out of electricity for a day. Then all the towers, the Wi-Fi, all the connections went out. Even the data was not sufficient in the mobile. That's the reason I could not come up into the calls before. So even that was giving me a worse feeling, that always staring at the walls, that creates a huge stress on the emotional state of human being. And that's a huge part. We do not know then in what way it is going to show up, because we might ignore it today, that okay, it's fine, but is it really fine? That's the question I have, because when you meet people, there is a different chemistry, different sort of things start happening. And whether you say creativity or collaboration or whatever it may be, because you are getting the cues from the body languages. In the communication part, virtually, of course, you can communicate through the languages and all those things. But the vital things like your body language, the body language cues, those are getting lost in the communications, and which is the very larger part of any kind of communication today. Because communication is nothing but, it is not just by using the flowery words, but making the person how you want to make them feel about themselves, So that is getting missed out in this entire process. We may say that, okay, we have to adjust with the new normal, but taking care of one's emotional state of being is also equally important, whether through it is meditation or prayer or whatever it may be. There has to be a routine of this sort of things. Even a person may not be spiritual or religious, but then he has to find some other ways to connect with the inner self.
So that's the another dimension in this new normal. I should say we need to emphasize on that to remain productive and, you know, to remain healthy in this scenario. So, Shamaji, I have a point of view, and I hope others, Neeraj and others, will also share. I have discovered that for me, music is meditation. So I put a headphone on my ear, and if I want to have, especially if I want to, in the evening or in the night when I want to relax, I will, or it doesn't matter, even in a long day, if I want to relax, so I will play some classical music types of Beethoven and Mozart and those of things, and that will relax me. But sometimes I need to pump myself out. I need a lot of energy. Then I'll play those rock music, pop music, which will charge me up. So I would not miss that. And the other thing is that it's also about a personality type. So some people, I also love people. I can't live without people. I'm a very social person, but I have also been able to condition myself, including when family and friends, कि even a physical world, when you're meeting, you're just taking handshake, yeah, you are hugging each other, but digital handshake is not very different. I'm able to look at you more clearly, in a better way, maybe more undivided attention than in a physical world. Because in physical world, I'm in the same room, but our eyes will keep getting distracted if there's some other action, some other people come in, I'm walking out, other things. So for me, this, and I'm trying going at a slightly higher level, spiritual level type thing, the external world, the stimuli of the external world should only be an input. How I process the input and how do I treat myself, that's up to me. So I have the ability to shut it down. I can, if I close my ears, the sound doesn't exist. If I close my eyes, all the visuals are closed for me. And if I close my mind, and that's the meditation process, to all the thoughts coming in, going out, and that's what the meditation process most people do is, then I'm literally meditating, even while I might be actually in the middle of a very busy life, maybe even driving. I say, I can meditate while I'm driving. Many people laugh at me, but I do, yeah. If I'm listening to music, which I love, and I'm 100% focused on my driving, then it is meditation. I'm driving meditation, where I'm 100% focused on the car and the road. Any distractions, everything else becomes secondary. So at that time when I'm driving, or like literally, it's like launching a spaceship. At that time, the whole world, I shut it down. I'm just focused on my drive, my cars, and soon we'll have these automatic cars, Tesla self-driving cars. Then real meditation is happening when you're driving, sitting in the car, you are taking a nap, and you will be woken up by the car. There's some you are getting into the gullies or people where cows and animals can walk in, or even pedestrians can walk in. But most of the time, your car will drive itself, and you can just relax, sleep, or whatever, take calls, whatever you want. So I think that is a world we are entering into. And lastly, I'll end up with one point. This I might have mentioned that in earlier calls too. There's this one guy, I really one of the big followers of him, Ray Kurzweil. He came up with this idea called singularity. Singularity is near, and he said by 2045, we all can be immortal if you want to be, and if you can afford to, because of the advances in artificial intelligence and machine learning. So our brain also can be replaced by computer brain, and our brain will be in the cloud. Anyway, most of our numbers and all the things, the notes we take on the cloud. In my case, I use Google Cloud. Many people use Amazon for everything. People use different Dropbox, whatever you use. But ultimately, except for our consciousness or feelings, everything else will be a backup will be in the cloud, so that I can if I want to refresh my memories from some beautiful days as a childhood, or maybe 10 years back, that vacation in Paris, I can just go to the photo album on my phone, I'm on my computer, on the TV screen, and the memories are back. So I'm slightly maybe more extreme case of it. I really very, very digital to start with. But for people who are very digital, especially young kids, if you see many children who are taking birth now, within 1 year, 2 years, they can't live without the iPhone, and for them that is the world. That is the world. And I'm past 40, but I'm also that like that. My life it has to be digital is a big part of me. Yeah.
So what I am hearing from you, Atul, is basically that you are practicing spirituality and meditation. So That's right. That's right. that's the great savior actually in this scenario. Like I used to do meditation for once, because I follow Vivekananda and Ramakrishna. So I have started doing it thrice because I am feeling much better now. Because once the Wi-Fi was not there, I was totally disconnected from the world. I was literally feeling restless. And then I started doing this. From yesterday onwards, I'm feeling much better. And, and that's a good input by 2045. Yeah. Immortality will be optional. But let us see 2022 first. So we are already seeing signs of it. And the other thing is, as you said on spirituality, so my thing is we should have the ability to zoom in and zoom out. As in sometimes I'm with my beloved ones, my close family or friends or whoever, or even in work situation, 100% attention to that person. Nothing else exists in the world. That's true love. But then many often I don't, it doesn't need 100% attention. Then at just a 10%, I don't even have to glance in it, like in a large meeting with the 10 people. So nobody is looking at each other most of the time. Most people are either looking at the slide or looking at the thing. So even a partial attention is good enough. And whenever there's something, or most of the time when I am at home, working from home, I like to work with the TV open, TV, especially Bloomberg screen on. And sound also, and the sound doesn't, most of the time I don't hear what they're talking and what they're going on, but the brain is programmed. I programmed myself in a way that anytime some keyword somebody said something on the TV which is of my interest, my brain immediately catches attention, and then I will listen to that conversation, what is happening. And otherwise just the screen, whatever is the subtitles scrolling on the screen, that's good enough for me. So it's, I think, a little bit of programming which we all do consciously or unconsciously, and I'm just sharing my programming, and I'm sure Neeraj would have his own, you would have your own, Sayyed would have your own. We all have done our programming to deal with the world in some ways. Yeah, so that's perfectly, you have mentioned it. Let me tell you one thing from my student life when I was in Sainik school. So there used to be our headmaster, Mr. His name was Colonel Prasad, South Indian man. तो उनका क्या कहना होता था, जैसे he was very aggressive kind of person, एक वो फौजी वाला जो मोड होता है ना हमेशा. Neeraj, your voice is breaking. Breaking. Your voice is breaking, sir. Your voice is breaking, sir. Just a second. I think Sayyed sir want to say something. So yes, sir. Please, can you add something? Yes, Sayyed can go ahead. In the meantime, I will check my network. Yeah. Hello. We are, yes. Now the new generation. I've been, once I was shopping in IKEA. I saw a lot of people, using the cafeteria there for as a workspace. They're having meetings. Some people are, working, and they're enjoying what you call the same luxury what Google is providing, except for other recreation. I think many people are changing. They find, the Starbucks and other places. And IKEA is giving free internet. So it's not even paid, it's free internet. So that is, people are, flocking to the place like IKEA and some of the malls, and they're having their meeting and they're having some chat. Some people are working. I'm seeing a new culture I haven't seen before. So that's one area where young generation is adjusting to new norm, and they are already what you call changed their perspective. That meeting in not in office or not having an office. I've seen some entrepreneurs with 5-6 people. They're meeting in big malls, and they're having a meeting, serious meeting. I've seen all of them having software coding. They're doing the coding, So that was a new
change that I've seen in young generation. With respect to meetings for corporate meetings, with new technologies and like HD 4K, some of my meetings also required eye contacts at iris level, especially. So that time we used to have some infrastructure which is very high end and high powerful, where you need the complete eye contact at iris level. So even such what you call devices and such infrastructure is available, and as time goes on, you will find more such new things. And with respect to a lot of back office work from Walmart or across the globe, all this is changing. They will, these changes will, what you call, have at home, all of them, IT, especially IT related stuff, analytics and all those. Hello? Yeah, okay. So back office works which are done in India and Hyderabad and a lot of other Bangalore, other places, they are already moving out of their offices, and they will surely adjust to the new norm. And small, especially even the small company startups also, they don't mind. The new startups are encouraging people to work from home once they know the team, once they know what kind of plans they have, product development plans or whatever, system administration plans or whatever. They already have a whole calendar. So, and every employee, I think Mr. Shyam sir asked how the new norm is happening. Yes, in IT, this completely changed, and people are adjusting. And with this, what you call, working from different places is possible. Only people with the old generations, where the work culture was different. Now the culture is already changed. They are embracing this new ways of meeting, new ways of conference. For them, this is what you call, they're more comfortable as time goes on. So they have the complete annual KPIs. So they know what they have to come out. So their meetings are all well organized. They have their whole 8 hours or whatever number of hours they're working. It's all well organized. So time management is completely incorporated into IT calendars and the IT areas. So, and with respect to the cloud is one of the areas where people are, completely 100%. I'm into cloud technologies. So we are using a lot of cloud areas, and everybody, there's no need of infrastructure. Previously, a big data center was a mandatory. I was a data center administrator with the Saudi Aramco. So what I've seen, we were also having sometimes how to migrate to the cloud. One of the, we were doing some RFPs for, and is doing some SWOT on that. So this moving to cloud, like the in-premises and private clouds, and where the data is very important, that area still, it's only just in the minds of the organization at the CEO levels, where privacy, but there are many privacy tools to unlock, secure the data. Once the management is convinced that this data is secured on the cloud, they don't mind going for it. So with all these new technologies and new ways, and like the AI and ML, these things are all changing the new workspaces. And with the virus, this big change, it has changed the minds of the people, and it has convinced the people. So the rate of innovation has increased with the virus, with COVID. And with office spaces, they will go, because it's again a big liability. If you have an office and suddenly people were having, desktop terminals, and suddenly there is a virus, and this happened with in Mindspace in Hyderabad, and all of them were scattered. And so even these things get reduced as time goes on. And they don't want to lock the whole tower. It's not one guy. One guy spread the rumor, or I don't know, it was true.
but the whole vertical infrastructure, lot of floors, all of them been, closed. So it has affected not one company, it has affected whole company. So government has, come forward and stopped, and again, they have to really work on. So many companies don't want to have such a disturbance while working, and we don't know tomorrow what kind of viruses are available for in future. So the office spaces will go, and only corporate meetings like spaces will be available, where if we really have to have one-on-one meeting or closing your tenders, or so that time the real time on the fly the spaces can be booked and they can have this. Yeah, thanks, Mr. Sayed. So let me add a few points around it. मेरे को पर्सनली अगर इफ यू टॉक अबाउट पर्सनली किसी से मिल के बात करना, इफ स्पेसिफिकली इफ आई वांट टू मेक सम पॉइंट, तो वो बहुत पसंद था. मैंने कभी भी अपने मैनेजर से अगर मुझे कुछ अच्छी मतलब एक बातचीत करनी है उनसे कि हाँ दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग और व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट माय फ्यूचर ग्रोथ, तो मैंने वो कभी इवन कैबिन में बैठ के भी नहीं की. मैं उनको नीचे चाय पे लेके जाता था, चलो सर चाय पी के आते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट टी कन्वर्सेशन ओनली आई यूज्ड टू हैव, मतलब पिछले जितना भी मेरा करियर स्पैन रहा 8-10 साल का, तो आई मेड अ पॉइंट कि ये जो सब कन्वर्सेशंस हैं ये उस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जाके आमने सामने आंखों में आंख डाल के होनी चाहिए कि आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी क्लियरली. बट विद दिस ऑल हिटिंग, और मेरी एक आदत थी दिन में 2 चाय जरूर पीना है दोस्तों के साथ. सुबह 11 बजे चाय, एक शाम को 4 बजे निकलने से पहले, मतलब 6 बजे निकलते हैं वैसे, 4-4:30 बजे एक चाय, और उस पे फिर हर तरह की डिस्कशंस लाइक बीट पॉलिटिक्स, बीट फैमिली में कुछ हो रहा है, बच्चे का कुछ इशू है, प्रॉब्लम है स्कूल को लेके, एजुकेशन को लेके, तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब. तो आई एम रियली मिसिंग दैट दोज ऑल थिंग्स. बट अभी with this video and everything coming up, तो धीरे धीरे आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न कि हाँ दिस इज न्यू नॉर्मल. और वो सब चीजें जो चाय पे चर्चा होती थी वो अभी भी मैं कई बार किसी फ्रेंड को, चलो ठीक है यार 11 बजे मिलते हैं 15 मिनट के लिए, वी विल हैव ऑन टीम्स ओनली, वी विल शेयर आवर वीडियोज एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल हैव अ टी टुगेदर. So this is how I am making like for me this is working out during this COVID era. I want to add one point about travel time in India, especially in Delhi NCR region, दिल्ली और गुड़गांव के बीच का, और कुछ एक और सिटीज जैसे स्पेसिफिकली आई वुड टॉक अबाउट बैंगलोर, जहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन रियली पुअर. तो वहां पे मैं जिन लोगों से भी बात करता हूँ, या यहाँ पे मैं खुद गुड़गांव, दिल्ली, जो दिल्ली से ट्रैवल करते थे लोग गुड़गांव आते थे, तो दे आर लाइक क्वाइट गुड, मतलब ठीक है और ये सब चल रहा है, चले तो अच्छा है. आई एम गेटिंग लाइक कपल ऑफ आवर्स इन अ डे मोर, जो कि मेरा यूजुअली ट्रैवल में स्पेंड हो जाता था 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को, तो 2 से 3 घंटे मुझे मिल रहे हैं, मेरे बच रहे हैं वो, और आई कैन यूटिलाइज देम. अगर ऑफिस में अगर मेरे को ज्यादा इनपुट कुछ डालना है तो मैं वहां पे भी लगा सकता हूँ, नहीं तो आई कैन स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. तो पीपल आर लुकिंग एट दिस in that manner also कि I am saving some travel time. और travel time इंडिया में कुछ एक सिटी में बहुत बड़ा इशू बन गया था पिछले कुछ टाइम में, और उसकी वजह से ये जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से वहां पे लोगों को इस चीज में काफी फायदा मिल रहा है. तीसरा एक पॉइंट है, मेरी टीम में कुछ थर्ड पार्टी से, मतलब वेंडर से कुछ लोग काम करते हैं, एंड दे आर इन बेंगलोर और पुणे में भी हैं, और उनमें से कुछ यंग मदर्स हैं, स्मॉल किड्स एंड ऑल. तो उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है. उनकी आई वुड से, श्यामा सर पूछ रहे थे कि आईटी में किस तरह से चल रहा है, मेरे हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी में मेरे को ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाई दिया है. क्योंकि उनको पूरा दिन ये रहती थी कि 4 बज गए हैं, मुझे निकलना है, मेरा बच्चा रो रहा होगा और मेरा टाइम हो गया है, मैं आगे का कल ही कर पाऊंगी वो. लेकिन नाउ आई कैन सी दैम वर्किंग टिल 7 PM इन द इवनिंग, डिलीवरिंग थिंग्स टिल 8 PM, और they are quite relaxed. तो इस चीज का जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगा है, जो विमेन्स की वापसी नहीं हो पाती थी वर्क फोर्स में आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी और समथिंग लाइक दैट,
तो उस पे मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू मेक अ बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट। और मेरी टीम में जितने भी यंग मदर्स हैं, दे आर क्वाइट चीयरफुल विद दिस फैक्ट कि नाउ दे आर विद देयर किड्स फॉर होल डे। और जब भी उनको कुछ भी मतलब हेल्प चाहिए किड के साथ, तो दे कैन वो सब भी कर लेती हैं। बीच में आधा घंटा बीच में ब्रेक लिया, एंड दे कैन लुक आफ्टर द किड, एंड देन दे कैन कम बैक टू द वर्क स्टेशन। और फिर वो जो ट्रैवल टाइम और वो सब बचता है, और वो जो है, एंड दे कैन स्ट्रेच आउट अ बिट ऑल्सो अगर चाहिए। सुबह जल्दी स्टार्ट करना है, कई बार बच्चा सुबह सो रहा है, देर से उठता है, तो दे कैन स्टार्ट अर्ली, 2 आवर सुबह लगा दिए। और फिर मान लो बीच में दिन में बच्चा सो गया, तो उस टाइम अच्छे से 2-3 घंटे फिर लगा दिए। तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ कुछ अगर मतलब लोगों पे हम बात करें स्पेसिफिकली, जिनके अपने पर्सनल कुछ कंडीशंस हैं लाइफ में, तो उन पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है मुझे। You gave a very good dimension, Neeraj. This women workforce, they are becoming more productive. So if we reframe it, shall we say that women workforce will come more during this new change? मुझे ऐसा लगता है सर, मैंने पिछले 10 साल के करियर में पिछले 4-5 साल से मैं टीम हैंडलिंग में हूँ, मतलब पीपल मैनेजमेंट में हूँ। तो मैंने कई बार देखा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यंग मदर्स टू कम बैक आफ्टर हैविंग किड्स। और मेरे को लगभग 3 लेडीज का एग्जांपल पता है, जिनको स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस रीजन उनको जॉब छोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत हेल्प करने की कोशिश करी जैसा मेरे मतलब पावर्स में था, लेकिन वो सब मैनेज हो नहीं पाया। और फाइनली मतलब स्ट्रगल के बाद दे सेड कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, एंड वी हैव टू लीव। और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा बच्चा मतलब 3 साल का 4 साल का होने के बाद भी वो पॉसिबिलिटी फिर रहती है कि दे कैन रीजॉइन। तो वो फिर जो एक फॉल आउट हो जाता है वर्कफोर्स में, वो अगर हम ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी का लॉस ही है। और विद दीज न्यू नॉर्मल्स कमिंग अप, मुझे लगता है कि उसमें काफी चेंज आने वाला है, और उसमें जो वो फॉल आउट था वो कम होगा, क्योंकि यंग मदर्स दे कैन टेक केयर ऑफ देयर किड्स एज वेल, एंड दे कैन स्ट्रेच आउट अ बिट जो भी उनको बीच बीच में टाइम मिलता है। Right. So suppose if I have to recruit 20 people today, knowing that they will work from home, so shall we emphasize more on female recruitments? सर मेरा एम्फेसिस हमेशा रहेगा टैलेंट पे पहला, ठीक है। अगर अब पहले ये रहता था, मैं स्पेसिफिकली मतलब आई मे साउंड लिटिल बैड सेइंग दिस, लेकिन जैसे ही लड़की की शादी होती थी, कोई टीम में मतलब लड़की है, तो जैसे ही शादी होती थी तो कहीं ना कहीं एचआर की तरफ से भी वो डिस्कशन शुरू हो जाता था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी वो चीज आनी शुरू हो जाती थी कि नाउ व्हेन शी इज गोइंग टू हैव बेबी, और व्हेन शी इज गोइंग टू ऑन दैट 6 months ऑफ वेकेशन, एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो अब उसमें लेके फिर थोड़ा सा मतलब एक वो कॉमन ह्यूमन मेंटलिटी है कि ये सब होने वाला है, तो इनके ऊपर उस तरह का काम नहीं देना है, उस तरह की डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट होनी चाहिए अब, क्योंकि शी इज मैरिड एंड एनी डे शी कैन प्लान फॉर अ बेबी एंड शी कैन गो ऑन मैटरनिटी लीव। और वो एक मतलब कॉमन सा एक मैनेजर जो होता है अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, जो सारी प्लानिंग करके चलता है, तो दैट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट। पर अब विद चेंजिंग टाइम्स, अब वो इक्वालिटी जो एक बहुत बात होती थी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो अब मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मोर रेलिवेंट हो जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं वो उस चीज को इक्वली हम सोच सकते हैं। और टैलेंट तो प्राइमरी थिंग है ही कि एम्फेसिस ऑन टैलेंट, एंड देन यू कैन ऑल वो जो बायसिंग जो पहले थोड़ा रहता था ना कि टैलेंट भी अगर बराबर है तो गो फॉर अ गाय rather than going for a girl, right? Go for a male employee. तो वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा चेंज होगा और होना भी चाहिए। No, I'm assuming the talent is same. You know, I'm assuming the talent is same. So given the choice, that's what the discussion. No discrimination. I would like to say something against it, and I will do the reverse discrimination. Actually, if I have to hire, then I'll prefer to hire
female, even though of marriageable age, married नहीं है या married है और बच्चे हो सकते हैं या हो जाएंगे, तो I'll prefer to hire a female rather than a male. And here's why. Number one, और इसी पे एक और स्टोरी भी है कि one of the world's biggest funds न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, वॉल स्ट्रीट पे जो एक बुल का सिंबल होता है, बुल का बना हुआ है जो स्टैच्यू, तो बुल के ठीक उसी कंपनी ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फंड मैनेज करती है, उसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया बुल के सामने में एक गर्ल, एक छोटी सी लड़की का स्टैचू लगा दिया। गुस्से में गर्ल उस बुल को चैलेंज कर रही है। तो इशू ये है कि उसी क्या है ना कि क्या क्या करते हैं ज्यादातर कंपनीज में और ज्यादातर ह्यूमंस में, हम लोगों में, इस कॉल में भी आई डोंट थिंक कि फीमेल्स हैं कोई, राइट? तो इन जनरल डिस्क्रिमिनेशन बाय डिफॉल्ट करते हैं हम लोग बचपन से। मैं अपने घर से अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी माँ, मेरी 3 बहनें भी हैं और मैं इकलौता बेटा हूँ, बट मेरे खाने पे, मेरे पढ़ाई पे, मेरे क्या शौक है, ड्रीम्स है, उस पे पूरे परिवार का ध्यान है। मेरे माँ का नहीं, मेरे नाना, चाची, दादा, चाचा, सब लोग का, क्योंकि मैं लड़का हूँ। तो ये जो पॉजिटिव बायस होता है तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है बचपन से। छोटा बच्चा भी जो है ना, तो उसको बिहार जहाँ पे है, तो बिहार में चाइल्ड, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज्यादातर बच्चे जो है ना कुपोषण के शिकार हैं, उनको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है। एक तो मतलब कि हो सकता है कि गरीब फैमिली से हो, उसको नहीं मिलता हो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा एक है कि गर्ल्स को बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। खाने में भी अगर दूध का एक ही ग्लास है तो लड़का को मिल जाएगा फैमिली में, वो लड़की को नहीं मिलेगा। और ये एक सोसाइटी में नहीं है, क्रॉस द वर्ल्ड होता है। कुछ सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी सोसाइटी में कम होता है, लेकिन मोर और लेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लड़कियों बचपन से होता है। और कमिंग टू नीरज पॉइंट्स अबाउट शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे या वो प्रोडक्टिवली एंगेज नहीं रहेगी, तो ऐसा काफी सारी इस पे स्टडीज भी आई हैं कि बहुत सारी जो प्रेस्टिजियस कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, डेलॉयट बहुत स्मार्ट में काफी आगे है। डेलॉयट की भी सीईओ भी कुछ पहले वुमेन सीईओ थी। तो उन लोगों ने पॉलिसीज को मॉडिफाई किया है कि बच्चे को बड़ा करना माँ का जिम्मेवारी है। ये किसने कहा? ऑब्वियसली माँ का ज्यादा जिम्मेवारी, क्योंकि माँ के पेट से आया है, माँ का नॉर्मल मेटरनल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है और इट्स इम्पोर्टेंट। बट आफ्टर पॉइंट बच्चे का पॉटी साफ करना है, बेबी को दूध पिलाना है, अगर उसको माँ का दूध नहीं पी रहा है या खाना खिलाना है, ये माँ की जिम्मेवारी। ये तो मैन मेड चॉइस है, ये नेचर ने ऐसा नहीं बनाया था, ये हम लोगों ने ऐसा बनाया है। एंड उसको चेंज करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, प्रोग्रेसिव कंपनीज एक्टिवली वर्किंग ऑन पॉलिसीज कि 40%। एक हाँ, जो बड़ी कंपनी जो बता रहा था, जो बहुत बड़ा जो फंड है, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, तो उसने ये पॉलिसी डाल दिया कि बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग करता है। उसने सिंपल सा पॉलिसी बना दिया है, उस किसी भी कंपनी में, सेक्टर में वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे जिस कंपनी में 40% या 50% से 40% से ज्यादा फीमेल नहीं है उनके बोर्ड पे, उनके डायरेक्टर्स। तो कोई कंपनी मान लीजिए कि गोल्डमैन सैक्स है या गूगल है, अब गूगल के बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 8 लोग हैं, कुछ इनसे कंपनी के लोग हैं और कुछ बाहर के अलग अलग कंपनी के होते हैं। लेकिन उनका ये था कि हम उन कंपनीज में हमारे पोर्टफोलियो से वो बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड जो उसमें करेंगे नहीं, यहाँ 40% मिनिमम फीमेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्लियर कट था, आर्टिकल भेजूंगा कि 40% से ज्यादा फीमेल नहीं है तो उस कंपनी में हमारे कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो। एंड ये बड़ा डिसीजन है क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नॉट थाउजेंड्स डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स का फंड है एंड बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनीज को हिला देने वाला चीज था। और उसमें मैं उस आर्टिकल का लिंक भेजता हूँ। That change and that mindset is happening। अब जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ, अमेजन खुद में बहुत ही, जेफ बेजोस खुद में काफी एग्रेसिव टिपिकल मेल शाउनी जो बोली है, बट रिसेंटली अमेजन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया, दे हैड अ फीमेल मेंबर ऑन द बोर्ड। फॉर्चुनेटली आवर ओन इंदिरा नूई, जो पेप्सी के जो सीईओ थी, और मेरा डबल कनेक्शन IIM कलकत्ता की अलुमनाई भी है, तो इंदिरा नूई इज ऑन द वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स ऑन द बोर्ड ऑफ अमेजन। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने काम किया है, स्टारबक्स ने, गूगल ने, जितनी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज है, दे आर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट
कि नंबर 1 की ग्रास रूट लेवल की एम्प्लॉइज की पॉलिसी जो होता है, उनका जो पॉलिसी जो HR की होती है, इज फ्रेंडली टुवर्ड्स वर्किंग मॉम्स, इज फ्रेंडली टुवर्ड्स फीमेल। सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट काफी सारे कंपनीज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और बना रहे। तो ये सारे जो चेंजेस है ना, मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में आ रहा है। एंड इस ग्रुप में जो भी है, जैसे यंग लोग हैं, मान लीजिए नमन जैसे लोग, या इवन अमन, अमल, तो जो यंग, उनका जिम्मेवारी बनता है, अमन हो चाहे, कि उनका जिम्मेवारी बना कि दैट जनरेशन हैज टू कैरी द बैटन, कि हमारे जनरेशन में लड़का हो या लड़की हो, हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अभी सैलरीज भी अलग अलग होती थी, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में, यूएस में भी सैलरी जो मिनिमम वेजेस भी जो मिलता था लड़कियों का कम मिलता था। अब वो बहुत सारे स्टेट बाय स्टेट बैन हो गया है कि यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट सैलरी फॉर based on the gender of the person, जेंडर या रेस या कलर, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। प्योरली आप फेवर मत करो, डोंट रिक्रूट कि कोई लड़की है तो उसको मैं फेवर करूँ, नहीं, एवरीथिंग बेस्ड ऑन द मेरिट। इंटरव्यू में आपको लगता है कि वो इस काम के लिए ज्यादा सुटेबल है, उसको ज्यादा दो, कम सुटेबल है उसको हायर करो, नहीं फेवर मत करो, बस गिव देम ज्यादा चांस दो उनको, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हुआ, दे कमिंग विद मोर हैंडीकैप्स इन द सोसाइटी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। Yeah, really good point, अतुल सर। डेफिनेटली फोकस टैलेंट पे और आपकी मेरिट पे ही होना चाहिए। एंड आई वुड जस्ट से कि जो भी ये कोविड ने किया है, ये बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा इस चीज को। जो पहले एक इंडिया में स्पेसिफिकली मैंने देखा है, कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है बैक ऑफ द माइंड कि she will have maternity leaves also, she will go for this also, and she may later on she may have to leave also because of all these things. तो अभी वो सब जो है, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को तो बहुत इम्पैक्ट दिखाई दिया है। मेरे साथ जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज हैं, यंग मदर्स हैं जो काम करती हैं, एंड पॉजिटिवली दे हैव लाइक इंक्रीज देयर एफिशिएंसी अ लॉट विद दिस चेंज, वर्क फ्रॉम होम चेंज। डिलीवरी बहुत क्वालिटी के साथ मुझे मिल रही हैं, बहुत टाइमली मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अगर मैंने दो बातें बोली पर्सनल लेवल पे, एक जो मुझे दोस्तों के साथ चाय पीना पसंद था, और वो जो बातें जो मेरे को लगता था कि आमने सामने हो सकती है, मैं अवॉइड करता था लोगों से फोन पे बात करना। मेरे को लगता था जिस तरह से मैं किसी को अगर मुझे कन्विंस करना है ना, तो मैं वो बात उससे हमेशा सामने ही करूंगा। मैं कभी फोन पे या कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि मैं चलो स्काइप से उससे बात कर लेता हूँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक अलग से नेगेटिव काइंड ऑफ इम्पैक्ट हुआ है कि मेरा जो एक सोचने का तरीका था वो मुझे बदलना पड़ रहा है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ये फीमेल एम्प्लॉयज का मुझे देखने को मिला है पर्सनल लेवल पे। Anyone else want to put some point? Hari, Vineet ji is also there. Aman is there. एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये हमने बात की फीमेल और मेल। द अदर पॉइंट इज कि एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीपल इन लेट्स से 50 के प्लस या 60 के प्लस जो लोग हैं, उनको कभी कभी कंपनीज भी डिस्क्रिमिनेट करती है, उनको हायर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो काफी सीनियर है। यंग फ्रेश बच्चों को सब हायर करना चाहते हैं क्योंकि यंग है, ज्यादा काम करेगा, थकेगा नहीं। लेकिन कंपनीज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि रियल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स, जो एक आर्टिकल भी किसी ने शेयर किया था कि 45 या 50 के बाद ही एक्चुअली पीपल आर एक्चुअली मोर एट द बेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव इयर्स ऑफ लाइफ। People in their 50s and 60s, because by that time they don't have to be trained and hand-holding नहीं करना पड़ता। They already have the broad picture experience from multiple dimensions। तो जो elders हैं, people in the 60s and 70s and 80s, उनको भी वर्कफोर्स में कैसे एंगेज करना है, मेरे ख्याल से वो भी अब धीरे धीरे आएगा। क्योंकि जब ऑफिस जाना नहीं है, मान ली सीनियर के साथ प्रॉब्लम है, काफी सीनियर कोई है, तो you don't want a very hectic travel for them, या उनको ज्यादा चलना नहीं। अब तो सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो maybe a 80-year-old with much more experience and much more knowledge, as long as productivity wise he is the same, काम उनका same है level का, so they can also be participate in the workforce। Sorry, continue with the rest. Yeah, Hari, you can go ahead, please. Yes, I just want to appreciate that everyone has put up the points very beautifully and well said by everyone. Almost सभी points cover हो चुके हैं। Yes, I just want to add something like few points जो
में एक्सपीरियंस किया है कि बेसिकली क्या होता है फ्रॉम होम, लाइक इट इज फॉर आईटी गाइज एंड एनी अदर प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन, उनके लिए काफी जस्टिफाइबल होता है और वर्क भी काफी अच्छे से दिखाई देता है उसमें. मींस they can calculate how much work they are doing from home also. और इसमें क्या है, कंपनी प्रॉफिट भी है, they save lots of expenses, office expenses and many other things. So but कभी सेल्स पॉइंट लाइक कोई सेल्स या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है एंड इफ दे आर आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम, सो बेसिकली क्या होता है कि सेल्स वालों को अगर ये मींस हार्डकोर जो हमेशा फील्ड पे ही होने चाहिए, ऐसे लोगों को अगर Hello. I think there is some connection issue. Okay. ठीक है. So we are almost like on the time. Just to conclude, I just want to add one point about health. ठीक है. अभी पता नहीं कितने दिन के लिए we have to be in this same phase. Clear guidelines अगर आ भी जाती हैं तो पता नहीं how much companies will be ready कि वो मतलब लोगों को उस हिसाब से जैसे पहले चलता था वैसे लोगों को दोबारा ऑफिस में बुला पाए. तो guys just टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि घर में बैठ के वो सब उतना हो नहीं पाता है. एक रेगुलर रूटीन होती है तो फिर भी थोड़ा सा मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट और वो ज्यादा रहता है. So for me, I have started going for a jog every day. मेरे सैनिक स्कूल के दिनों में एक हमारे हेडमास्टर होते थे साउथ इंडियन, कर्नल प्रसाद. वो कहते थे अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब वो थोड़ा फौजी स्टाइल में बोलते थे, उनका तरीका अलग था कि अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट गो एंड हिट द ग्राउंड. जाके 10 चक्कर लगाओ. 400 मीटर ट्रैक था स्कूल में, कम से कम उतना तो करो देश के लिए. तो उनका वो कहने का तरीका था वो मुझे कई बार याद आ जाता है. ठीक है, घर में बैठे हो सारा दिन और कुछ नहीं कर रहे, तो शाम को जाके एटलीस्ट गो फॉर अ रन एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स और वॉक लाइक 30-40 minutes. So it can really make a difference on your health. So take care, stay safe. I think we can close for the day. Tul sir, Shama Okay. sir. Thank you so much. It was a very nice discussion. It was a small group, but काफी अच्छे से discuss हुआ. Yeah, absolutely. Yeah, okay. Good night. Thank you, sir. Good night, all of you. Have a great day. yeah, Yeah, thank you.